Hi everyone, welcome to S4 Sharnya Science classes. I hope you all are able to follow my videos. If it is really helpful for you, please support me by liking and sharing with your friends. If anybody still remind to subscribe my channel, then please subscribe it also. Hi everyone, welcome to S4 Sharnya Science classes. Here we are continuing the chapter Microbes in Human Welfare. In the previous class, we have discussed about the help of microbes in household purpose and the industrial purpose. Today, we are going to discuss about the use of microbes in sewage treatment. Right. So, before going to the details of this chapter, this topic, we have to understand what do you mean by a sewage. Right. Sewage actually contain large amount of organic matter or the microbes, we can say that. That's actually called the sewage. Right. So, sewage means you can see that a huge amount of organic matter. Right. Maybe it can be toxic. Mostly it will be toxic in the sense, right. So, a huge amount of organic matter which can be toxic, and these toxic organic matter must be removed from that water, the sewage, because you know that these all sewage at last will be dumped into a water bodies, right. If as such it is going, then that can cause severe problems, right. तो microorganisms use कर देती है to remove all these that not toxic organic matter, right. So microorganisms are widely used in sewage treatment plant for removing this toxic organic matter, right. And sewage or the waste matter treatment, we can say that plant consists of two stages mainly. One is the primary treatment and the secondary treatment. Secondary treatment को हम biological treatment भी बताती है, right. I hope you have an idea about what you mean by sewage. Sewage जो बोल रही है, it is actually the waste water treatment, or that sewage जो हम बताती है, it's actually the waste water, or simply we can say that municipal waste water को हम बताती है, right. So you all have seen that हमेशा किधर भी municipal waste water होती है, वो कोई से भी तालाब में और river में, you can see that every whatever it is, it will be dumped directly into that, right. इसकी वजह जिसमें द सीवेज में यू कैन सी दैट देयर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, राइट. मोस्टली वो ऑर्गेनिक मैटर टॉक्सिक भी होती है. इसकी वजह से इसको डिग्रेड करने के लिए देयर विल बी इनफ माइक्रोब्स ऑल्सो, राइट. और ये टॉक्सिक मैटर ऐसा हमने डंप किया है, इट कैन कोज सीवियर प्रॉब्लम्स टू द एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स. इवन जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स होती है, वी कैन से दैट द वाटर डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स, उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है. सो इट इज़ मस्ट to remove that toxic organic matter from that sewage, so that there will be polluting substance in that water, right. So these sewage is treated in sewage treatment plants, STPs, right, to make it less polluting, we can say that, right. So totally the sewage treatment plant has two main steps or two main stages, we can say that, which include the primary treatment, which is a physical method, and the second one, the secondary treatment or the biological method, right. Now we are going in detail of that, what do you mean by this primary treatment and all. Before going to that, we have to understand what is the need of that sewage treatment, right. तो पहले जो बता रही है फर्स्ट नीड जो सीवेज ट्रीटमेंट की to remove the organic waste, right, and microbes from that, which is the municipal waste में और जो waste water में it has then a large amount of toxic organic waste or microbes. To remove, you can say that we can use that sewage treatment plants, right, to remove toxic organic waste and microbes, right. And you can see that ये जो टॉक्सिक ऑर्गेनिक वेस्ट और माइक्रोब्स होती हैं विच कैन इन्वाइट डिसीजेस एंड एपिडेमिक, राइट. सो व्हेन दिस वाटर मीट्स कम्युनिटी वाटर बॉडीज लाइक लेक, पॉन्ड, छोटा सा तालाब वगैरह के जितना कम्युनिकेशन जितना कॉन्टैक्ट में आ जाती है, इट कैन इवन कोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैंडमिक्स और एपिडेमिक्स लाइक दैट, राइट. सो इट कैन कोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितना डिसीजेस. टू रिमूव दैट वी नीड सम जितना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, राइट. Again you can see that the sewage is actually made less polluting by passing it through the sewage treatment plants, right. उसकी वजह से you can see that now what will you say that microbes के amount कम हो जाएगा. We can reduce different what will you say
kinds of diseases and all, right? Potential pathogens, toxin को eliminate कर सकती है, right? और you can see that the nutrient content को हम decrease कर सकती है. What is why we have to decrease the nutrient content? आपको ये सीवेज में we told that already organic matter ज़्यादा है, organic matter ज़्यादा है, उधर microbial growth इतना होगा उसको degrade करने के लिए. So by decreasing the nutrient content in that, we can easily reduce the microbial growth also. और the chemical contaminants और उसका order in the sense we can say that the foul smell उसको remove करने के लिए भी we can use this sewage treatment plants, and also we can reduce the BOD, biological oxygen demand. What is this? That we will discuss in the coming slides, right? So these all are the purpose of sewage treatment plants. Now we are going that what are the main stages, right, of sewage treatment plants, right? The first stage जो बता रही है primary treatment. In the primary treatment you can see that it's a physical removal of particles होती है, right? Physical removal in the sense we are telling that here you can see that the removal of floating debris, जो मेन debris होती है ऊपर की तरफ जो float होती है, right, उसका removal है, right? So it is actually a physical process, very important, you have to understand it's a physical process है, right? It uses the sedimentation and filtration, right? Mainly they are using sedimentation and filtration methods to filter small and large particles in that, right? जो हमारे floating debris होती है उसमें से large particle और small particle को separate करने के लिए mainly they are using sedimentation and filtration method. First what they are doing, first the sewage is passed through a mesh screens of small pore sizes to remove the floating objects like polythene or anything, right? So you can see that जो हमारा इधर you can see that these are the small meshes, right? जाले जैसा structure उसमें से pass करेगा, तो small particles जो means only will pass through this, बाकी जो polythene और बड़ा बड़ा जो particles है वो सब कुछ उधर you can see that will be removed from that, right? And you can see that the grit is actually removed by the sedimentation by passing the sewage into a grit chamber. तो remaining जो हमारा grit वगैरह होती है that small stone or sand particle उसको remove करने के लिए next after treating with the mesh chamber we will pass through that sewage, right? So water into that grit chamber. Grit chamber में smallest grits वगैरह वो sediment नीचे sediment हो जाती है, right? And after that you can see that will be it will be then it is kept in a setting tank, right? और उसमें जो suspended materials होती है that will be धीरे धीरे settle down होगा to form a primary sludge, right? So here after these all things, right, they will make a primary sludge, right, बनाएगा, right? And the remaining fluid जो होती है वो that's actually the supernatant that will be taken for the secondary treatment, right? तो क्या बता दिया हमने, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो बोल रही है इट इज़ अ फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल होती है, इसमें से हमारे फ्लोटिंग डब्रिस में जो लार्ज पार्टिकल्स होती है, राइट, उसको रिमूव करती है. तो पहले उन्होंने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन मेथड्स यूज़ करती है ये ट्रीटमेंट के लिए. मैश जाले जैसा स्ट्रक्चर लगाती है, उसमें वजह से पॉलिथीन वगैरह लार्ज पार्टिकल्स को वो ईजिली रिमूव कर सकते हैं. देन दैट ना सीवेज वाटर विल बी ट्रीटेड विद द ग्रिट चेम्बर, उसमें से जो ग्रिट है वो नीचे सेडिमेंट हो जाती है. उसके बाद दी सीवेज वाटर, रिमाइनिंग सीवेज वाटर विल बी पास थ्रू द सेटिंग टैंक. सेटलिंग टैंक में क्या होती है, यू कैन सी दैट जो सस्पेंडेड मटेरियल्स वगैरह होती है वो ईजिली सेटल हो जाती है एंड दैट विल फॉर्म ए प्राइमरी सर्ज, राइट. और रिमाइनिंग सुपरनेटेंट जो पानी होती है दैट विल बी टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, राइट. हम जो ग्रिट जो बताते हैं इट्स एक्चुअली द स्मॉल सॉइल, स्मॉल पेबल्स वगैरह होती है, दैट्स एक्चुअली यू कैन सी दैट, राइट. एंड द सेटल्ड सॉलिड्स फ्रॉम द प्राइमरी स्लड्ज जो हम बताती हैं, राइट, एंड द सुपरनेटेंट फ्रॉम द प्राइमरी एफ्लुएंट. तो हियर यू कैन सी दैट जो सेटल्ड सॉलिड्स को हम बताती है प्राइमरी स्लड्स, और ऊपर वाला रिमाइनिंग पार्ट ऑफ वाटर दैट्स कॉल्ड द एफ्लुएंट, और दैट एक्चुअली द सुपरनेटेंट वी आर टेलिंग प्राइमरी एफ्लुएंट बोलती है उसको, राइट. That will be taken for the secondary treatment.
In secondary treatment ko actually we are telling that the biological treatment, right? So what is actually happening here? We are using the biological process, right? जैसे कि heterotrophic bacteria वगैरह होती है जो sewage में, उसको use कर we are actually doing this process, right? So we can simply say that it is a biological process by heterotrophic bacteria present in the sewage, right? So here what they are doing, the primary effluent होती है, right? That means primary sludge remove करने के बाद जो effluent ऊपर की portions होती है, that's called effluent, right? Primary effluent that is actually aerated in aeration tanks, right? Large, it's actually primary effluent will be passed into a large aeration tank, and it will be aerated, very properly aerated, constantly agitated. For the aeration you can see that will be aeration, that there will be constant agitation will be possible there. So totally आपने washing machine में वगैरह देखा होगा, right? Why they are spinning, so that every area में वो पानी soap solution वगैरह every area of cloth में पहुंचाओ, right? The same type of that here you can see that large agitators they will use, so that continuous agitation की वजह से पूरा आपका that ना effluent में aeration हो सकते हैं, right? So इसकी वजह से you can see that this allows the vigorous growth of useful aerobic bacteria, right? Aerobic microbes की grow बहुत ज़्यादा हो जाती है, and that will form a phlox, right? A phlox, that nothing but it's actually the bacteria associated with the fungal filaments and form a mesh like structure, उसको हम बताती है phlox, right? So क्या होती है ये aeration tank में equal agitation होती है, इसकी वजह से रैपिड ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया होती है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर देती है, राइट? एंड ये एरोबिक बैक्टीरिया यू कैन सी दैट दे विल फॉर्म दैट ना सो विच देन एज अ फ्लॉक्स, राइट? एक दैट ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाती है, दैट्स कॉल्ड द फ्लॉक्स, राइट? ये फ्लॉक्स जो हम बता रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट ये एक्चुअली बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट की एक मैश जैसा स्ट्रक्चर होती है. यू कैन सी दैट दीज आर द फ्लॉक्स, यू कैन सी दैट इसमें से बैक्टीरिया होती है, इट इज़ अ मैश लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि जाले जाले जैसा स्ट्रक्चर होती है, जिसमें बैक्टीरिया और उसके साथ साथ फंजे की हाइफे स्मॉल वेरी फाइन फिलामेंट्स आर देयर, राइट? सो दीज विल फॉर्म ए स्मॉल मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, इसको हम बताती है द फ्लॉक्स, राइट? ये फ्लॉक्स एक्चुअली दे विल कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो इसमें वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होती है उसको कंज्यूम करेगा, एंड उसकी वजह से इट विल रिड्यूस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको रिड्यूस करेगा, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट द माइक्रोब्स, दैट्स एक्चुअली द फ्लॉक्स, द माइक्रोब्स इन द फ्लॉक्स. वी आर कॉमनली माइक्रोब्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज देयर आर बैक्टीरिया एंड ऑल्सो फंजेस देयर, राइट? सो दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट, उसकी वजह से हमारा बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम होगा, राइट? सो इट विल बी रिड्यूस्ड, राइट? सो दिस इज एक्चुअली द सेकेंडरी ट्रीटमेंट की फर्स्ट प्रोसेस, राइट? इसके बाद यू कैन सी दैट in the picture also you can see that, right? The primary effluent which taken from the primary treatment that will be passed through the aeration tank, अच्छे से aeration होगा, then after that you can see that the flocks will be made here, right? Flocks you can see that will be settled down, and here इसमें से थोड़ा सा flocks, right? वापस आपने देख लो ये इधर एक्टिवेशन दैट ना स्लड्ज जो बनाती है, राइट? सो हियर दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लड्ज, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉक्स होती है, राइट? सो दे आर रियली एक्टिव माइक्रोब्स, एक्टिव माइक्रोब्स की दैट ना एक सेटलिंग पोर्शन है, राइट? सो एफ्लुएंट दैट ना सेटलिंग टैंक से पास किया है तो दैट मीन्स आफ्टर एरेशन इफ द एफ्लुएंट इज पास्ड थ्रू ए सेटलिंग टैंक यू कैन सी दैट विल बी दीज फ्लॉक्स विल बी सेडिमेंटेड, राइट? और ये सेडिमेंट को हम बताती है एक्टिवेटेड स्लड्ज, एक्टिवेटेड स्लड्ज, राइट? सो दिस कैन बी रिमूव्ड लेटर, और उसमें से एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्लड्ज अगेन पम्प बैक टू द एरेशन चैम्बर, राइट? सो एज ए इनोकुलम, एज ए स्टार्टर इट विल बी अगेन पम्प्ड बैक, then we can use it further, right? And these sludge is actually pumped into the anaerobic sludge digesters, where the anaerobic bacteria forms gases like methane or carbon dioxide or even hydrogen sulfide. ये gases वगैरह produce करेगा इसके बाद, that we are going to discuss next. Yes, you can see here biological oxygen demand, right? So what you mean by biological oxygen demand, that also we have to understand clearly, right? So mostly asking the amount of oxygen required for the microbial decomposition of organic matter in a sample, that's called biological or biochemical oxygen demand, right? The amount of oxygen consumed by the bacteria
to oxidize all the organic matter in 1 liter of water, or simply we can say that the amount of, right, oxygen required for microbial decomposition of organic matter in a sample, in a given sample. इसको हम बताती हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट नथिंग बट द सेम, राइट. कितना ऑक्सीजन चाहिए उसमें, जो एक्चुअली यू कैन सी दैट बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन यूज़ कर देती है टू ऑक्सीडाइज, और यू कैन सी दैट डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन दैट सैम्पल. वो गिवन सैम्पल में जितना ऑर्गेनिक मैटर, दैट मीन्स वी कैन कंज्यूम इट एज ए 1 लीटर, राइट. 1 लीटर वाटर में, सीवेज वाटर में जितना ज़्यादा जितना ऑर्गेनिक मैटर होती है उसको कंज्यूम करने के लिए और डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करना है उसको हम बोलती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट. इसका स्पेशलिटी है, जब ऑक्सीजन रिमूव होती है वाटर से, ऑर्गेनिक मैटर इज एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया. जितना कम ऑक्सीजन होती है, सो इट विल बी, दैट मीन्स नॉर्मल जो ऑर्गेनिजम्स होती है, दैट मीन्स नॉर्मल इनहिबिटेंट्स ऑफ वाटर होती है, उनके लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगा, क्योंकि उधर ऑर्गेनिक मैटर आ गया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स आ गई. वो जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना हो गया उसको सब कुछ यूज़ करेगा, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना है ये ऑर्गेनिक मैटर को. तो क्या होगा, नॉर्मल इनहिबिटेंट्स होती है, राइट, सच एज हमारी फिशेस और सम अदर ऑर्गेनिजम्स वगैरह, उसको एक डिमांड रहेगा ऑक्सीजन की, दैट मीन्स देयर विल नॉट इनफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड द डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसकी वजह से देयर विल बी वेरी लो ऑक्सीजन कंडीशंस इन द वाटर एंड इट मे किल द फिशेस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो we can simply say that this BOD is a measure of organic matter present in water. BOD ज़्यादा है, that means organic matter ज़्यादा है in the water, right. So greater BOD means more polluting potential हम बताती है. Raw sewage में, that means we are, if it is not treated, right, उसमें you can see that the BOD can be 300 to 400 mg पर लीटर होती है, राइट. इतना ज़्यादा दैट BOD हो सकती है, राइट. अभी हमारा नेचुरल वाटर है जिसमें अनट्रीटेड, वी कैन सी दैट इसकी BOD इफ़ यू आर दैट चेकिंग, इट कैन बी 5 to 10 mg पर लीटर है. तो यू कैन ईजली अंडरस्टैंड, जब भी BOD ज़्यादा होती है दैट मीन्स इट इज़ दैट मच पोल्यूटेड वाटर, राइट. So you can say, so that's why we are telling, if you are dump the raw sewage into the receiving water and all, that dissolved oxygen की amount बहुत कम हो जाएगा and उतना ज़्यादा microbes grow करेगा and उसकी वजह से बहुत सारा fishes वगैरह मर जाएगी, right. So that's why we are telling sewage treatment is very important to remove all these problems, right. So I hope you have an idea about that secondary treatment clearly. Now I will come back to the same point so that you will have that idea of that remaining क्या होती है, right. So हमने बता दिया था secondary treatment में जो primary treatment की बात, primary effluence होती है, we can say that here it is influence, right. So here that will be kept in a aeration tank, उधर अच्छे से agitation दे देती है, उसके बाद you can see that there will be flocks formation will be there, right. So you can see that, right. So you can say that here हमारा that flocks, right, because of that bacteria, right. So aerobic bacteria की presence की वजह से बहुत ज़्यादा flocks बन जाती है. ये flocks actually settling tank में that water will be final settling tank में लेकर आएगा, तो ये flocks will be settled down as activated sludge. A activated sludge can be easily removed, right, or the removing effluent can be again further treatment के लिए हम ले सकती है. तो ये activated sludge से एक छोटा सा portion, that we can say that which is acting as a inoculum or a starter, right, which will be pumped back into the aeration tank again, so that वो microbes की activity बहुत easily कर सकते हैं, right. So the effluent is passed into the settling tank where the bacterial flocks are sediment, right. ये sediment को हम बताते हैं activated sludge and it can be removed. The small part of this activated sludge is again pumped back into the aeration tank to serve as a inoculum or as a starter, so that it can easily make the flocks again, right.
Now what will happen? So here you can see that, right? So all these things we have finished, right? Now you can see that the sludge is actually pumped into another sludge digester, जिसको हम बताती है anaerobic sludge digester, right? इसमें pump कर देती है, right? The sludge is actually pumped into anaerobic sludge digesters. उसमें you can see that anaerobic bacteria की presence में some other gases will be formed, like you can see that carbon dioxide, right? Methane, CH4 and H2S, hydrogen sulfate वगैरह gases anaerobic digestion के बाद form होगा. And इसके बाद you can see that the effluent will be there that will be released into the water bodies like streams and rivers. You can release very easily. तो इसके बाद ये sludge digestion के बाद the remaining sludge is actually pumped into large tank. उसका नाम है anaerobic sludge digesters. इसमें क्या होती है, anaerobic bacteria उसके ऊपर act करेगा and there will be fermentation, and that bacteria and fungi in the sludge, right, they will produce more methane, hydrogen sulfate and carbon dioxide gas. These gases can be used as a biogas, as a fuel we can use. Very important fuel है biomethane, right? Methane, saturated hydrocarbon है, it's very good fuel. तो hydrogen sulfate है, methane है, carbon dioxide, which can be which is a part of the biogas which we can utilize as a fuel, right? So you can see that these gases will be there which we can use as a fuel, we can use that. And the remaining effluent जो है उसमें से बाकी हमने harmful की substance को वगैरह सब कुछ remove कर दिया है, and this can be released into the natural water bodies जैसा river, stream वगैरह आप आसानी से remove कर सकते हैं, right? So there will be no problem for that, right? So here you can see that it's already given the overall steps हमने एक slide में दिया है, so that you can see that primary treatment के बाद जो primary effluents होती है that will be taken into the aeration tank. Aeration tank में अच्छे से agitated, constant agitation हो जाती है, उसकी वजह से aerobic bacteria उसमें act करेगा and they will form the flocs, right? ये flocs you can see that इसकी वजह से the bacteria, it's actually the fungi और bacteria की combination है. ये जो organic matter है उसको अच्छे से use करेगा, right? उसके use करने की वजह से BOD reduce होगा obviously, and you can see that there will be activated sludge will be there, right? So effluent को हम settled tank में use करेगा, and that settled activated sludge को, right, which will be taken into anaerobic sludge digester जिसमें anaerobic bacteria उसके ऊपर digest कर biogases like CH4, CO2 and H2S वगैरह produce करके which can be used as a fuel, and remaining effluent जो हम बता रहे जिसमें से सारे toxic substance remove किया है which can be pumped into the natural water bodies as such. So this is the overall idea about the sewage treatment plant. I hope you have understand that. Here the pictures of that waste material, you can see that you can see very clearly, right? These all are actually हमारा गंगा यमुना वगैरह water bodies है which is actually polluted by all these polluting water, right? All these things. इसमें you can see that solid material भी है, or even you can see that they can even found carcasses, dead bodies and all the things are actually they have dumped into this water bodies. You already seen that the Ministry of Environment and Forest, they have already initiated the Ganga action plan and the Yamuna action plan to save that rivers from water pollution, right? Maybe you have already seen that how much changes happened because of this strict laws and all, right? So Ganga action plan and Yamuna action plan already taken in action so that they can remove all these problems of that water pollution of these very famous water bodies. I hope you have understand the sewage treatment by using microorganisms very clearly. Hope you enjoy the video. Thank you everyone. Hope you all understood this video. Thanks for watching. Have a nice day.